जी के स्थान पर और श्री चंद्रशेखर आचार्य जी ये नवदीप से सची माता को पालकी में बिठाकर भक्तों के साथ अद्वैताचार्य जी के घर में ले आए। Krishna. So Mahaprabhu came to the house of Advaitacharya. We heard this yesterday, and there was a huge crowd of devotees at the house of Advaitacharya. Now we're gonna hear further. उस समय श्री चंद्रशेखर सची माता को लेकर श्री अद्वैत भवन में पहुंचे। So Chandrasekhar brought Sachi Mata to the house of Advaitacharya at Shantipur. Sachi Mata had so much love, Vatsalya love for Mahaprabhu. Nobody can imagine this. So Rupa Goswami has said, so Rupa Goswami has said this is one verse. Rupa Goswami is very close to Mahaprabhu, like an antarang personality. There are two types of people, antarang and bahirang. So an antarang devotee, you can't share the innermost heart, words, feelings, emotions with everybody. You only share with someone who are close to you. So that's antaranga people. So in Nityanand Prabhu is also antaranga, but among all antaranga disciples of Mahaprabhu, Swarup Damodar Rai Ramanand are closer, and also more than is Rupa Goswami closer to Mahaprabhu. He understands the innermost heart's desire of Mahaprabhu, which he established, which Rupa Goswami established, Antaranga Bhav of Mahaprabhu, Manobhisht. So when Sachi Mata came there, this beautiful Lila. So Mahaprabhu immediately offered Dandavat Pranam to Sachi Mata when he saw her. Some people say, oh, you're a sannyasi. If a family member comes, you should not talk to them after taking sannyas. But in Chaitanya Charitamrita, Mahaprabhu is showing clearly the relationship Sachi Mata had with Mahaprabhu, that Vatsalya Bhav, Matri Bhav, that's very strong. That Mahaprabhu, even despite being a sannyasi doesn't require to offer Dandavat to anybody else. So when we see a sannyasi, we offer Dandavat Pranam. But if a sannyasi offers Dandavat Pranam to us, this is not good for us. If a sannyasi is offering Pranam to us, our pious
प्रणाम करें, उसकी दीनता है, That's his humility, he's doing it. He will do it नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें अभी अपना अभिमान नहीं रहता, because he has no pride. आश्रम में हूँ, मैं सन्यास आश्रम में हूँ, He has no pride that I'm a तो sannyasi. अभिमान नहीं रहता, So he will offer pranam to everybody. लेकिन हमारे लिए सही नहीं Like, होगा, but it's not good यदि for us. सन्यासी हमको दंडवत प्रणाम करे। Sannyasi offering dandvat to us is और not good for महाराज us. जी बोलते थे, And our Gurudev used to say सन्यासी को देखने से ही दंडवत प्रणाम करना अत्यंत आवश्यक है। that even if you're seeing a sannyasi from distance, देखते वक्त immediately we should offer dandavat to him. यदि नहीं किया जाए And if you don't do, तो अगले दिन उपवास करना पड़ेगा। then fast the other day. If you're not offering dandvat to a sannyasi, सन्यासी को देखकर then यदि how प्रणाम do we दंडवत recover नहीं this किया, fault? तो By अगले दिन fasting the next day. व्रत करना पड़ेगा। Fasting from grains, कुछ water. नहीं, Don't eat anything. तो इससे अच्छा तो कर ही लो तो बढ़िया है। So better than that is offer pranam to a sannyasi whenever you see them, even from a distance. तो रूप गोस्वामी जी की बात में जहाँ पर उन्होंने कहा, ये ध्यान देने वाली बात है, ऐसा प्रेम दान दिया कि जो अनादिकाल से नहीं दिया गया था, या कहा गया कि कभी दिया ही नहीं गया। So Krishna Prem was never given before Mahaprabhu. लेकिन अंतिम जो लास्ट जो लाइन है, The last line उन्होंने क्या कहा, in this verse he said, शुरू तो वही सच्चिनंदन, वे श्री सच्चिनंदन गौर हरि हमारे हृदय में स्फूर्ति को प्राप्त कर। ये रूप गोस्वामी जी ने आशीर्वाद दिया, वरदान। Rupa Goswami gave this blessing. गुरु जी के समय में, In the time of Gurudev, during the time of Gurudev, की महिमा का गान करते करते बहुत सारे पंडित आते थे। many devotees Pandit अच्छी एक बात, would visit Gurudev. So I can recall one episode. उन्होंने इस बात को बड़े अच्छे से कहा। He explained it very properly, Gurudev. बोलते, रूप गोस्वामी जी Rupa Goswami, कौन से कुल के थे? he belonged to which क्षत्रिय community? कुल के, वैश्य कुल के, या Kshatri, शूद्र कुल के? Vaishya, Shudra, Brahman, ब्राह्मण कुल के, Brahman Kul, भारद्वाज गोत्री, Bhardwaj और Gotra, बड़े श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल के थे and a रूप गोस्वामी great के। Brahman, Rupa Goswami. तो बड़ी अच्छी बात कही, गुरु जी को भी बड़ी अच्छी लगी। So Gurudev liked it. कहते ब्राह्मण का स्वभाव होता है क्या? देखो, The हर nature वर्ण of का a अपना Brahman स्वभाव is होता है ना। knowledge. आप शूद्र को कुछ भी कहो, You, लेकिन वो अपने स्वभाव के अनुसार you ही say करता है। anything to a उसको Shudra, मेहनत करना, परिश्रम करना, but he will सब work कुछ as per सहन his करना, knowledge, है, hard उसके work. स्वभाव में ही है। That's his nature, hard work. क्षत्रिय स्वभाव कैसा? Kshatriya nature is दिख जाता है ना, किसी ने कुछ कह दिया तो एकदम खोलने लग जाता है। they can't tolerate anything. They get angry easily. क्षत्रिय Kshatri. स्वभाव। The fighters. वैश्य स्वभाव क्या? What is Vaishya जहाँ nature? जाएगा कहीं ना कहीं मुनाफा प्रॉफिट लग जाएगा। They would want to earn profit. जहाँ पर जाएगा बिजनेस की बात Wherever they करेगा, go, they would want to make money, थोड़ा पैसा बच गया, earn extra money, save extra money. स्वभाव That's नहीं है। Vaishya nature. ब्राह्मण स्वभाव What कैसा is होता है? Brahman nature? एक तो ब्राह्मण सत्यवाद होता है, Brahman is सच में honest, वास्तव में truth, ब्राह्मण real Brahman. सत्यवाद बोलता है, भले ही उसके अपने जीवन की कोई घटना हो। जैसे श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी एक उदाहरण देते थे उसका, So Bhakti Vigyan Bharati Goswami Maharaj would quote an example. ज्वाला। एक बालक One boy गुरु जी के पास गया। went to Gurudev. गुरु जी, आप सबको सिखाते हो, You teach, Gurudev, you teach मैं भी everybody. आपसे सीखना I चाहता also हूँ। want to learn from you. गुरु जी ने कहा, अच्छा Gurudev ठीक है, said, okay, हम sure, सबको सिखाएंगे, I'll teach you. I'll लेकिन पहले train ये you. तो बताओ First tell तुम me, कौन से जाति के हो, you कौन से belong वर्ग to के which हो, उसी community? अनुसार ही सिखाया जाए। According to that, I will ब्राह्मण train हो, you. ब्राह्मण जैसी शिक्षा, क्षत्रिय हो तो फिर क्षत्रिय जैसी शिक्षा। Brahman, Kshatriya. अब इससे ये भी पता लगता है कि गुरु जी हर क्षेत्र में, हर फील्ड में जी कितने एक्सपर्ट हैं, दक्ष हैं। So Gurudev is expert in every ब्राह्मण को field. ब्राह्मण जैसी He शिक्षा would दे, train a Brahman boy as per क्षत्रिय को Brahman शस्त्र विद्या training, ये शिक्षा दे, Kshatriya boy as per Kshatriya training, और वैश्य को Vaishya boy व्यवसाय और as per रक्षा, Vaishya training, धन इत्यादि की शिक्षा देगी, और शूद्र को जो and Shudra तीन वर्ण की जो सेवा होती है। तो इससे पता लगता है as per his qualification, as per his कौन सी जाति, कौन से वर्ग के हो। standards. So you tell me first, you belong to which community, which caste? सबको
वो शिक्षा दे So सकते हैं he's a सबके लिए, guru is Gurudev is like eligible to give training to all, और वास्तविक गुरु जी होते ही everyone, ऐसे हैं। everybody. That's his qualification. अब Now इससे पूछा गया, अच्छा बताओ तुम कौन से वर्ण के हो, उसी अनुसार तुम्हारी शिक्षा the boy was asked, "You belong to which community, which caste?" तो ये अपनी माता के पास गए, So he went to his mother. बोलते माता Mother, मैं कौन सी जाति I कौन सी belong to वर्ण which का हूँ? community and which caste? माता ने कहा बेटा मैं Mother नहीं said, जानती, I don't know. जब मैं युवती थी When I was young, तो मैंने अपने जीवन में बहुत सारे पुरुषों की सेवा की, I served many men in my life when I बहुत was सारे young. पुरुषों के साथ मेरा संबंध रहा, I had relationships with many different इसलिए अब men. मैं ये नहीं So जानती I don't know कि तुम कौन सी जाति का that कौन you से belong वर्ण to का। which caste. बस इतनी बात सुनकर And hearing this, बालक गुरु जी के पास आया, he went बोलते to his पूछ कर आया Gurudev. है माता से, बोलते हाँ गुरु जी, You asked, did you ask your मेरी mother? माता ने कह Yes, दिया my mother कि said, मेरे को नहीं पता तुम I कौन don't से know. वर्ण के हो, I don't know you belong to मैं which community. युवक काल में बहुत पुरुषों के साथ रही हूँ। In my youth time, I spent time with many men. So I don't ये know. सुनते ही उन्होंने क्या कहा, गुरु जी ने, Gurudev, ब्राह्मण हो, Gurudev said, you're a Brahman. जो अपनी माता के संबंध में ऐसी बात कह सके, इतना That साहस कर person who सके, can say like this for his mother, ब्राह्मण स्वभाव। he's honest. That's the nature of a और Brahman. ब्राह्मण शरीर, ये भी एक स्वभाव होता है, जैसे कितने बड़े बड़े व्रत करते हैं, Like fasting, निर्जला करना, Nirjala तिल नहीं, Ekadashi. इनके लिए बड़ा आसान हो जाता है, It's easy for Brahmanas. They can fast इनके easily. लिए निर्जला व्रत, कितने व्रत Nirjala करना fasting, स्वाभाविक एक it's क्रिया in है, their स्वाभाविक nature. इनका हो जाता It's in their nature, they can easily है। जो fast. क्षत्रिय और वैश्य Kshatriya, शूद्र के लिए तो वैसे ही Shudra, नहीं करते, they can't do it. इंडिया नहीं करता, They can't fast like दिन में 4-5 Brahmanas. बार खाएगा, They will eat थोड़ा 5 खाएगा, times. लेकिन निर्जला इत्यादि शुद्ध उतना सहनशील नहीं। इसी से कहा गया स्वभाव के कारण So, as per वर्ण nature, और आश्रम का निर्धारण Varna and ashram are decided as per nature, जन्म से नहीं, not by birth. इसलिए भक्ति सिद्धांत So, सरस्वती Bhakti ठाकुर Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada देवी वर्णाश्रम did not establish Varna Ashram Dharma. He स्वभाव के established अनुसार Devi Varna Ashram Dharma. देखा जाएगा As per कौन the से वर्ण nature, और it कौन will से be आश्रम, decided you belong to which Varna, which ashram. स्वभाव के अनुसार। As per the nature. एक सन्यासी भी गृहस्थ की तरह हो सकता A है और गृहस्थ sannyasi भी एक can be सन्यासी की तरह, like a ghrastya, and a उसके ghrastya can स्वभाव be से like पता a लगेगा। sannyasi. तो This ये can be ब्राह्मणों के कुछ determined by their स्वभाव है, nature. सत्य कहना, So it's the nature of a Brahman to be honest, to पवित्रता speak धारण truth, करना, शौच इत्यादि पवित्र एकदम to स्वच्छ रहते to हैं, to be साफ सुथरे clean. रहते हैं और बड़े बड़े व्रत कर लेते हैं, They do big, तपस्या कर लेते they हैं। do क्षत्रिय वैश्य ये सब severe नहीं करते। austerity. Kshatriya and Vaishya can't do this. और एक ब्राह्मण स्वभाव पता क्या And होता है, one more Brahman nature दान is मांगना, भिक्षा मांगना, they बड़े do एक्सपर्ट होते हैं। bhiksha, asking for वामन भगवान आया alms. दान मांगने के लिए, Vaman Bhagwan बलि did राजा that. के यज्ञ में, He went to तो Bali इनको बड़े Maharaj अच्छे से to ask for bhiksha. दान मांगने की प्रक्रिया इनको बड़े अच्छे से आती है। ये सारी बात मैं किस लिए कह रहा हूँ, Why I'm saying इसके all साथ this? साथ एक मुख्य बात है ब्राह्मण स्वभाव में, There's one more important point in ये the nature of a आशीर्वाद देते Brahman. हैं। They give blessings, they give mercy. ये बात एक पंडित जी ने कही थी गुरु जी के सामने, One बड़ी अच्छी Pandit ji बात said this to Gurudev. कि ब्राह्मण स्वभाव है कि वो बड़े से प्रसन्न हो जाए और मन बड़ा प्रसन्न हो If तो they become आशीर्वाद little बड़े happy, they give huge blessing. रूप गोस्वामी जी Rupa Goswami, बड़े उच्च कुल भारद्वाज गोत्रीय he ब्राह्मण कुल he belonged to a very इसलिए topmost caste, अनर्पितम चरित चिरात कारुण्य होती है न खबर। इस श्लोक Bharadwaj में Gotra. महाप्रभु की वंदना तो कर रहे हैं, So he glorified Mahaprabhu लेकिन अपना in जो this ये जो verse. स्वभाव है But his own वो स्वभाव प्रकट हुआ। nature he's expressing by this. कैसे प्रकट हुआ, How it's अंतिम पंक्ति में in the last line he has done that, expressed his nature. सचिनंदन, सूरत वे सचिनंदन, वे सचिनंदन जो कि इस धरातल पर इस पृथ्वी पर आए हैं, That Sachinandan who came जिन्होंने on this ऐसा earth कृष्ण प्रेम प्रदान किया and जो आज तक to कभी to नहीं give us दिया गया Krishna Prem होगा। that which nobody else could do before. और राधा भाव, And राधा Radha जी के Bhav, भाव और कांति को लेकर आए, and he came वो along with सचिनंदन गौर Radha's हरि bhav and स्फुरत व complexion. That सचिनंदन Sachinandan आपके Gaur हृदय में Hari. स्फूर्ति को प्राप्त करे, है ना। ब्राह्मण स्वभाव रूप गोस्वामी जी वंदना क्या कर रहे हैं, आशीर्वाद भी दे रहे हैं। So Rupa Goswami is giving actually blessings to all of वो us. महाप्रभु आप सबके हृदय में That स्फूर्ति को Mahaprabhu प्राप्त करें, should आपके be हृदय में established in उपस्थित हो जाए। everyone's heart, तो ब्राह्मण should स्वभाव आड़े manifest में in आ गया ना, everyone's heart. This आशीर्वाद is देने Brahman's की nature जो to give blessing.
उनके अंदर सब समय एक उत्कंठा रहती है। इस They, श्लोक के माध्यम से सारे through जगत पर this आशीर्वाद verse, दिया। he is giving जो blessing to महाप्रभु को मानेगा, the entire world. सूरत में सच्ची Whosoever who would believe in Mahaprabhu, honor वो Mahaprabhu, they would महाप्रभु get this आपके हृदय में blessing. स्फुरित हो जाए। एक तो ये बात थी। This is one point. दूसरी बात, Another point is सचिनंदना क्यों कहा? why he said कौन से Sachinandana. महाप्रभु हृदय में स्फूर्ति को प्राप्त करें? Which सच्ची Mahaprabhu माता would की come to your गोद में। heart? The one who is the son of Sachi Mata. सची माता प्राण धन जय Sachi गौर। Mata Pranthan Jai तो Gaur. वहां पर माता का उदाहरण क्यों दिया? Why Mata? इसलिए दिया क्योंकि Because जैसे सची माता का अपने पुत्र निमाई like के Sachi प्रति Mata has एक स्वाभाविक एक natural मातृभाव है, motherly एक प्रेम affection, वाला भाव है, love, prem जहाँ पर बालक for her माता की son. गोद में मल और मूत्र को भी Like the त्यागता है, child can leave तब भी stool माँ and उसको urine, लाड़ can pass लगाती है urine and stool in the और lap उसको of her गले mother, लगाती है but she still और उसको hugs अपना her child दूध भी पिलाती है। and breastfeed her child. इतनी गंदगी फैलाने पर भी, Even after the child इतनी dirties जिद her करने पर भी, cloth and हाँ, sari and lap, still she तब भी accepts माता him. उसको सब प्रकार से देख रेख She करती है, takes care of the क्योंकि child अपना ही लाल है, because अपना that's her child. She gave ऐसे birth to it. रूप गोस्वामी जी Similarly, जब Rupa Goswami, महाप्रभु की वंदना तो कर रहे हैं, he's glorifying पर लास्ट Mahaprabhu, में कह रहे हैं वो but in the महाप्रभु जो last, सच्चिदानंदन, he's saying that अर्थात Mahaprabhu who is जैसे सच्ची Sachinandan. माता का महाप्रभु के प्रति मातृभाव है, How Sachi ऐसे वो Mata महाप्रभु हमारे प्रति has भी love for वैसे Mahaprabhu, मातृभाव रखे, similarly, we should also क्योंकि have, हम भी कम नहीं है गंदगी फैलाने में, because we are also not less in हम spreading भी कम नहीं dirtiness. है काम क्रोध की लाठी We खाने are में, full of lust and greed and हम भी कम anger. नहीं है अपवित्र रहने में, We are also very हम भी unclean, कम नहीं है मल मूत्र inauspicious. त्यागने में। We are also good in तो passing फिर stool and urine. So, कौन हमारा बाप रहेगा? who is our किसका caretaker? आश्रय लें? Whom should we तो take फिर वो shelter? महाप्रभु That जो Mahaprabhu सच्चिदानंद who is Sachinandan. सूरत हो गई सच्चिदानंद। Sfurat Hoy Sachinandan. वैसे ही महाप्रभु का जो वात्सल्य हमारे ऊपर भी वर्षण करे, मतलब वर्षा करे, That ये Vatsalya बात should बताए। come on us as well. समझ आया? That love, सारे Vatsalya पॉइंट्स Ras. लिख लो, So you all should अभी write these एग्जाम होगा points. And तो there will be पूछा another जाएगा सबसे, test and these questions would be asked. ठीक है? Maharaj is saying तो this. यहाँ पर सची माता So को देखते here, ही महाप्रभु ने उन्हें seeing दंडवत Sachi प्रणाम। Mata, Mahaprabhu तो immediately यहाँ पर वो offered बात खंडित हो गई, जो Dandvat लोग कुछ Pranam. कहें कि सन्यासी को अपनी माता को So प्रणाम नहीं people करना say चाहिए, sannyasis क्यों नहीं should not करना offer चाहिए? pranam to ये their महाप्रभु ने mothers. अपनी माता को This प्रणाम is किया wrong. Mahaprabhu has done it. We can offer. और In a sannyasi can. कांदी थे लागिलो सची कोले उठाई और सची माता रोने लग गई। Sachi Mata started उन्होंने crying. महाप्रभु को अपनी गोद में ले लिया। She took Mahaprabhu in her lap. कैसा अभी अभी निमाई ने सन्यास लिया, Nimai just took अपनी माई को sannyas. चले जाएंगे, Now Nimai would महाप्रभु go को away. चले जाएंगे। Mahaprabhu would go away. सची माता Sachi Mata, महाप्रभु को उठाकर she अपनी lifts up गोद में ले Mahaprabhu in and keep him in her lap. लेता। कितना वहां पर वात्सल्य भाव उमड़ रहा There's होगा so much सची माता। Vatsalya love there in this तुम्हार Leela. दर्शने दुहु हईला विवल केश न देखिया सची हईलो विकल अंग मुझे मुख चुंबे कोरे निरीक्षण देखिते न पाए अश्रु भरीले नयन। इसको ध्यान से सुनो, Listen to this carefully. विशेष करके हमारे अभी हॉलैंड के भक्त लोग, अभी हम लोग हॉलैंड में जर्मनी में थे, तो हमने वहां पर इन बच्चों ने वहां पर महाप्रभु की सन्यास लीला का प्रदर्शन, The devotees in Holland, लोगों ने देखा होगा they फेसबुक पर, performed a sannyas इंग्लिश में Leela था, at कैसे Germany. महाप्रभु You निमाई must have seen सन्यास on ले रहे हैं YouTube how, और सची माता how Mahaprabhu took कैसे रो sannyas रही है, and Sachi और Mata उनके was साथ crying. साथ सारे And बच्चे, together, सारी महिला आकर सची माता को all सांत्वना other दे रही हैं और वो भी रो रहे ladies हैं। came to आप लोगों ने console देखा Sachi होगा, Mata. You और अगर guys हमारे must have seen हॉलैंड के on भक्त लोग YouTube. सुन रहे हैं कथा को, तो इस पर ध्यान देना। So those बताया था कि कैसे people from Holland must be hearing this carefully, उस अभिनय को कितना और अच्छा हम दिखला सकते हैं, so that we can improve that drama, that तो play देखो यहाँ पर next क्या हुआ। time. एक दूसरे को देखकर दोनों ही विवल हो उठे। So seeing each other, Sachi Mata and Mahaprabhu both दोनों रोने लग गए। started crying. महाप्रभु के केशों को ना देखकर Mahaprabhu had no hair. He shaved his केश head. ना देखिया सची हईला विकल। Sachi Mata, seeing
Mahaprabhu without hair, his beautiful hair, long hair, till shoulder. His hair were long till his shoulders. And that barber who instructed, whom Mahaprabhu instructed to cut his hair, his hands started shaking. How can I cut such beautiful hair? I've never seen such beautiful hair. Please don't cut this hair. Please don't cut this hair. But Mahaprabhu, because he has to take sannyas for us, so he has to follow the complete maryada, the complete dharma. Mahaprabhu instructed that barber, no, you have to cut my hair. And the moment all his hair were removed, Mahaprabhu's stage shine. It was like more than trillions of sun. We saw in that play, the boy, he still studies in college. He had long hair, medium length, but in this drama, his name is Anant Krishna Das. In this play, to play the role of Mahaprabhu as a sannyasi, he removed actually all of his hair. Can you do it? But that child, to, to show the to play the role of a Mahaprabhu as a sannyasi, he actually removed all his hair from his head. Although he is a college-going boy, Ananta Krishna Das from Holland, I think. So here, Sachi Mata. So the katha you are hearing, meditate on it. Don't just hear it with bhav. Think about it, meditate on it. Chintan. So when you hear it, you do meditation on it. I mean, you hear it carefully. Mahaprabhu offers pranam at Sachi Mata's lotus feet. Sachi Mata hugs him. Nima is not a small child. How old was he at that time? 24 years old. And what did Sachi Mata see? Mahaprabhu's hair is no more. Sachi Mata became like worried. And because of Vatsalya love, she starts to like massage Mahaprabhu's arms, or back and limbs. After you meet your child after a long time, what do you do? To show love. You hug your child after you meet your child after a long time. You show love, right? By putting hand on their head. Mother has a different style to show love. Father has a different way to show his love for the child. Vatsalya love means Narsim Dev Bhagwan. He started. Narsim Bhavan put his hand on Prahlad Maharaj, and then he made Prahlad Maharaj sit on his lap, and he started licking him with his tongue. This is Vatsalya love. So Mahaprabhu is not in Grihast ashram now. Mahaprabhu has taken sannyas, but still Sachi Mata, she is showing Vatsalya love to Mahaprabhu. This verse is very beautiful, which Maharaj is saying. It touches the heart. She's actually kissing the cheeks of Mahaprabhu, Sachi Mata. She's not able to control. She's she's looking at Mahaprabhu, observing Mahaprabhu.
showing love to Mahaprabhu, motherly love, and her eyes have tears in. सची माता समझ रहे गोद में ले लिया केश नहीं देखे She took him in her lap. There's no hair on Mahaprabhu's head, भाई को महाप्रभु को माता सची माता चुंबन and she's kissing him, her face, his face. Sorry, his face, Mahaprabhu's face, और महाप्रभु को अच्छे से देखना चाहती and है she एक wants to see Mahaprabhu carefully, कानों को देख रही है ears, eyes, face, everything carefully. But she has tears in her eyes, so she's not able to see Mahaprabhu clearly. आंखें भर आई आंखें नीली हो गई Eyes are wet. Her eyes are wet, so she's not able to see properly. ठीक से नहीं दिखा इसलिए कभी कभी भक्त को क्या So sometimes devotees, भाव आता है भावना आती है when they get दिल into पिघलता है when they have, आंखों में अश्रु आते हैं अब छुपाना है किसी के सामने क्या करें they don't want to show their tears to others in भक्तों को public. देखा रो पड़ते हैं They see devotees and they लेकिन start वो crying, रोना सबके सामने तो दिखाना उचित नहीं होता but they can't कोई show क्या सोचे कोई कैसे tears सोचे in front of everyone कोई in ये भी सोच public. सकता है हाँ कितना बड़ा भक्त हो गया Somebody can say, "Oh, she's such a अब great आंखों में आंसू devotee." तो आ गए किसी कारण से So now tears क्या are there करते in हैं our eyes. पानी मार लेते हैं But what do? We put water. पानी लेकर अपनी आंखों को They फेर take देते हैं water and they इससे put on their आंख eyes. भी गीली हो गई So मुंह भी गीला हो गया face is wet, eyes are wet. और अब कोई क्या जानेगा Now nobody can know that we had पानी tears. बहका था पानी निकल रहा है So I put water on my face. That's water in my eyes as well. इसलिए अपने भावों को संभ्रम करना So मतलब अपने भावों को गोपन कर देना छिपा देना they hide their emotions. इसलिए सच्ची माता आज The Sachi Mata today, महाप्रभु को देख नहीं she's not able to see Mahaprabhu. और ये माताओं के लिए एक संदेश है And this is the message for mothers, all mothers. क्या संदेश है What message? सब महाप्रभु की चरणों की वंदना करते हैं वो आपका वैराग्य कितना ऊंचा Everybody says Mahaprabhu's सब renunciation was so गुरुदेव की वंदना great. करते हैं आपका वैराग्य कितना ऊंचा Gurudev's renunciation was so अपने सब high. घर बार को छोड़ You left everything, family, mother, father, money, सब wealth, सुख सुविधा छोड़कर all comforts. अपने सारा जीवन भगवान की सेवा में And you gave all your life for bhajan. लेकिन जब अपना घर का बेटा But when our own son wants to become a son, का बेटा यदि my own भगवान child, की सेवा when और he wants समाज to की सेवा करना चाहे do तो Samaj Seva or Bhagwan Seva, Gurudev Seva, then the mothers, अनुमति नहीं देते they will not give permission. उसका मातृभाव आड़े में आ Her जाता है Vatsalya love comes in the like an obstacle. मेरे Oh my apple's eye, इसको मैं कैसे दे my only child, how can I give my son? मैंने जन्म दिया इसको I gave him birth. इसलिए किया I इसको तो इसलिए बड़ा किया था ये मेरी सेवा करे I gave birth क्या to सेवा him करे so that he would take विवाह care of करके me. संतान हो जाएगी ये सेवा होती है किसी को इसमें संतुष्टि मिलती है ये मिली है आज तक सची माता Sachi अपना Mata मातृ स्नेह दिखला तो is रही है showing her motherly love. सची माता का वात्सल्य उमड़ तो रहा है वहां तक तो ठीक है लेकिन सची माता ने महाप्रभु को माना तो नहीं किया और क्या होगा सारे देश की नहीं देशों की और समाज की सेवा होगी पिता अपने पुत्र को कहता बेटा जाओ आज गर्मी है बाहर लोगों को पानी पिला अच्छा शरबत पिला A father says to his child that you go and feed water to everybody on the street. Oh, it's too much cold. You share blankets with everybody. This is Samaj Seva. Just like a mustard seed, it's very small, tiny service. Real Samaj Seva is what? इससे भी बढ़िया फिर देश की सेवा Okay, more than this is country seva. You should die while going to the border, while you can give your life. This is also country seva. But there's one more seva bigger than this. That is if someone to serve Bhagwan and preaching leaves everyone. कृष्ण कथा कृष्ण कीर्तन करना लोगों को भक्त बनाना And if someone takes the in charge of making others devotees, this is the topmost seva. Spreading Krishna consciousness is the topmost seva. This is service of the family, service of the country, service of the society.
You might not क्योंकि आपका वात्सल्य भाव agree बीच में आ जाता because your motherly love would come in between. है। लेकिन But पुत्र विवाह करके बहू को लाएगा, if the son gets संतान married होगी, and brings उससे भावना होगी, daughter-in-law ये and वाली सेवा जो है बहुत छोटी and है। she will take care of me, this is a very small इससे बड़ी seva. क्या है? There's a भगवान की bigger सेवा seva, that is the service और of the समाज Lord. की सेवा, सबको भक्ति का And Samaj उपदेश देने की society सेवा। seva is when you are making devotees in कभी society. यदि किसी घर में बच्चे को, पुत्र को So if in संस्कार the के कारण, house पिछले संस्कार के कारण a boy or a child, मन में because ऐसी of his भावना previous प्रेरणा होती है sanskars, wants to कि मैं भी अपना जीवन मठ में निकालूं, give his जैसे और life ब्रह्मचारी लोग to हैं, the mutt, मैं भी I, भगवान की सेवा I करूं, desires to समाज serve की सेवा Bhagwan, करूं, so wants to तो serve the मेरे माता पिता society, की सेवा तो अपने आप उसके अंदर आ then गई, his parental responsibility will be अपने आप उसके अंदर आ accomplished गई। और उस automatically. मेरे एक के कारण मेरे माता पिता नहीं, 7 माता पिता, So 7 because of पीढ़ी, that one child, जहां पर the भी कहीं 7 पर भी है, कहीं generations, पर भी उनका जन्म हुआ है, wherever the कहीं 7 फंसे हुए हैं parents किसी he नरक में had in कहीं, previous lives, तुरंत वहां wherever से they are उनका stuck उद्धार in होता है the और hell एक or heaven, अच्छी और immediately बड़ी they would be सदगति प्राप्त होती है। इस liberated. शास्त्र का वचन है, These ये are the हमारी words of the आपकी बात नहीं है। scriptures. These are not इस my वचन words. को, इस शास्त्रवाणी को कौन ठुकरा सकता है? Who can neglect इसमें these क्या words? डाउट है There's no और क्या doubt in संशय हो that. सकता है? There's no कुछ doubt भी in नहीं। that. There can't be any doubt in this. इसलिए So घर में बच्चों को, in your family, ये चेतन चेता में से थोड़ा हट के बात कह रहा हूँ, I'm saying a different thing from लेकिन Chaitanya एक शिक्षा Charitamrita. की बात है। This is about teaching. यदि संतान को, बच्चे को If भक्ति करने की इच्छा है, उसको a कभी नहीं child रोकना, wants to be a devotee, never नहीं तो आप stop उस the पर child. हिंसा कर रहे हो। Otherwise, you are killing your child. Spiritual suicide. और वो हिंसा कभी ना कभी एक दिन अपना भयंकर रूप दिखलाएगी। And that उस समय violence रोना पड़ेगा। somewhere in the future would show a very bad face. हाँ, ये पुत्र नहीं होता तो अच्छा था। You might say, oh, why I have जैसे this कौन child? रोया? आत्मदेव ब्राह्मण धुंधकारी के। पहले Atmadev अपने Brahman पुत्र cried for प्राप्त हो जाए, पुत्र Dhundakari प्राप्त हो जाए। like this. पुत्र का प्राप्ति का मतलब He होता है was लौटे को। he was desperate for करोड़ों a रुपए, son. खरबों रुपए की लौटे। When he had a son, लेकिन he बाद was में क्या like, कह रहे हैं? why ऐसा I पुत्र have this नहीं son? होता तो बहुत I अच्छा wish था। I had no son. बाद में बदल गई। His words changed. His feelings changed. इसलिए माताओं, He was fed पिताओं, up with his child. जितने भी सुन रहे हैं, So all the ध्यान parents who देकर are बात को listening, सुनो। listen to ये this थोड़ा सा carefully. जो ममता है, The mamta you वो have रखो, you for your child, लेकिन you उस have ममता it, को but अपने बच्चों के आगे बढ़ने में, don't भगवान की stop ओर आने your में कभी child उसको रोकना नहीं। from doing bhajan because of your अगर नहीं love for जाना them. चाहता तो अलग बात If है। somebody doesn't want to do जो bhajan, सच that's a में different thing. भक्ति करना But if चाहता है, someone really wants to do उसको bhajan, प्रेरणा देनी चाहिए, then you inspire उसका them. हौसला बढ़ाना चाहिए, उसका विश्वास बढ़ाना चाहिए, Inspire them. और उसको थोड़ा सा धक्का Increase भी their देना चाहिए। confidence जाओ, in तुम अच्छे bhajan. रास्ते पे जा रहे Yes, you are going to the right हो, path. Go ahead. नहीं तो ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? Otherwise, what will happen? थोड़ी सी नौकरी कर लोगे, सुबह What can you से do? जाओगे, शाम को Job, आओगे, 9 to 5 job, 10-12 घंटा काम करोगे, 12 to 10 hours work, बच्चों की देखरेख करोगे, take care of your son, child, बहू और आ children. जाएगी, थोड़ा सा You'll झगड़ा get वगड़ा भी हो daughter-in-law, जाएगा, you will fight with your daughter-in-law, ऐसे ही बस सारा जीवन and all life will go घिसट के like बस this, चलता रहेगा। just ये like अच्छा this. है? Is this good? ये कोई अच्छा है? Is this good? या फिर अपने बच्चे को Or, देखकर अरे कितना सीख गया, oh, you want to तो लोग develop उसके your चरण child छूते in हैं, bhajan. Oh, my लोग child is उसको learning माला so पहनाते much. हैं, लोग उसके People लिए are ताली honoring बजाते him. हैं, People are कितना clapping गर्व him. होता है माता को। People are ये हमारा बच्चा है, garlanding him. This is so आज ब्रह्मचारी good. बन गया, He has become a मठ की brahmachari. सेवा करता He's है, serving the mutt. भगवान की सेवा He's करता serving है the और Lord. सारे संसार And के जीवों की he's सेवा करता है, serving every living entity. सब उसके प्यारे हो जाते हैं। Everyone is close to him. कितनी He's close यहाँ to पर everybody. कितनी शिक्षा है। There's so much siksha, teaching, इसलिए learning in this. महाप्रभु का मुख चुंबन करके So सची Sachi माता Mata is kissing the cheeks of महाप्रभु के Mahaprabhu. मुखमंडल को देखना She's चाहती है, looking at the face, परंतु beautiful face आंखों of में अश्रु Mahaprabhu, भर आ but जाने due के to her कारण the tears in her देख नहीं eyes, she's not able to see Mahaprabhu. कांदिया को हे सची बाछारे निमाई विश्व रूप सम ना करियो निठुरा। कितनी यहाँ पर In this सची verse, माता का प्रेम, Sachi Mata's love is seen. ये मार्मिक बात है। There is a deep कांदिया को ही ना सची बाछारे message over here. रोते रोते सची माता कहने She's लगी, crying and saying, हे पुत्र निमाई, "Oh, my son तुम Nimai, भी विश्व रूप की भांति निष्ठुर मत बन जाना। you don't become stone-hearted like Vishwarup." मतलब महाप्रभु के बड़े पुत्र, Mahaprabhu's elder महाप्रभु के बड़े भाई, brother, जो सची माता की पहली the संतान first विश्व रूप प्रभु,
another son of Sachimata, Vishwarup वो तो Prabhu. सन्यासी He बनकर became a sannyasi घर छोड़कर and चले he गए। left the house and the family. महाप्रभु जी सची माता तो पहले ही एक अपने पुत्र को खो बैठी, Sachimata Mata had अपना वो already सन्यास lost लेकर चला one गया। son because of his sannyas. अब सची माता महाप्रभु को ऐसे आंख में आंसू पोंछते Sachimata पोंछते और स्वयं रोती रोती is क्या कह रही है, like removing her इसको tears, चिंतन करो, wiping her tears, इसका चिंतन and करो, she's saying to इसको भावना को Mahaprabhu, don't become stone हाँ hearted अपने like हृदय में Vishwarup बसाओ। Prabhu. So we all should meditate on this and keep this in our सची heart. माता कह रही है, हे पुत्र Sachimata is निमाई, saying, oh my dear तुम son भी Nimai, विश्वरूप की भांति निष्ठुर you also बन don't जाना। become nishtur, उसने hard, सन्यासी like होकर Vishwarup. He मुझे became a पूर्ण दर्शन sannyasi नहीं दिया। and he did not give me complete darshan. यदि तुम भी वैसा ही करोगे Even if तो and मैं if, अवश्य ही मर जाऊंगा। and if you also do like him, then I will die. अब यहाँ पर सची माता क्या कह रही है, Now what is Sachimata saying here? अगर पुत्र सन्यास ले लिया, If the son takes sannyas, if the son takes sannyas, यदि पुत्र ने सन्यास ले लिया, then तो कभी भी खबरदार, then be aware. शास्त्र के विरुद्ध बात है, This is against the उसको words of कभी भी scriptures. ये नहीं कहना चाहिए कि तुम वापस आ जाओ। Never tell to your son, come इसमें back. उसका भी अमंगल, This is पूरे घर inauspicious का for your मंगल, son and also अमंगल ही for अमंगल। you and for your entire family. सची माता अब निमाई को ये नहीं कह रही तुम लौट आओ, Sachimata is not saying to Nimai, you come back, क्योंकि अब सन्यास हो चुका है, because sannyas is already taken by Mahaprabhu, है ना। और right? देखो ये सन्यास की बात है, This is about ब्रह्मचारी और sannyas. सन्यासी में अंतर होता There is है। a difference between brahmachari and sannyasi. आप लोग गलत नहीं समझना। Don't get confused. ब्रह्मचारी का मतलब क्या? Brahmachari means what? अभी वो सीखने गया He's है कि वो getting रह पाएगा training, कि नहीं रह पाएगा। whether he would be मतलब एक रास्ता खुला है, able to go अगर through it नहीं or रह not. पाया तो पुनः वापस आ सकता है। If he can't go through this training, then लेकिन he can यदि come back. सन्यासी हो गया, But if he becomes a sannyasi, जैसे देखो ब्रह्मचारी होते हैं मठ में, फिर सन्यासी भी so होता है, first you लेकिन एक become बार a सन्यास ले brahmachari, लिया then you become a फिर sannyasi. रिटर्न टिकट नहीं है, If you take sannyas, then there's no return फिर ticket. एक ही डायरेक्शन है, There's बस only one way, one direction. डू और डाई है, Do or die. करो या मरो, Karo or maro, do or die. फिर वापस आने वाला सीन नहीं है। There's no scene लेकिन about जो coming ब्रह्मचारी back. का मतलब क्या होता है, जो अभी Brahmachari means प्रयास कर रहा who है, is trying to make ट्राई कर efforts, रहा है, trying. मैं ब्रह्मचारी बनने का प्रयास I'm कर रहा trying हूँ, to become a सीखता है brahmachari. और उसमें I'm दृढ़ता हो learning. जाती है, पक्का हो जाता है, तो फिर वो आगे सन्यास ले लेता है। And if he gets past, then he further later इसलिए on कोई becomes a हानि नहीं है। sannyasi. So there is no harm. यदि कोई If किसी के हृदय में सच में प्रेरणा आती है कि हाँ ये संसार, यहाँ का काम धंधा, लोगों से बात कर करके पागल, सारा दुनिया पागल, मेरे को ये नहीं करना, if somebody doesn't want to get married, हंसी खुशी, earn money, then है ना, मेरे को क्या करना है, he wants to do भगवान की सेवा bhajan, करके serve the Lord. ये वाला जीवन संवारना है और अगला जीवन भी संवारना I want to, like, he wants to है। इसी से संबंधित एक improve बात this बता life and the next future life. Then we should not stop मैंने एक them. जगह देखा था, At one place I saw एक one कॉलेज में in the college, छात्र स्टूडेंट्स बैठे थे, students were sitting. तो कुछ मैनेजमेंट के लोग इंटरव्यू Some लेने people आए, from the management came to take interview. 500-600 बच्चे बैठे, There were 500 तो students. मैनेजमेंट के ऑफिसर आकर सबसे पूछ Management रहे हैं, अच्छा बताओ, asked everyone, okay, tell, अच्छा बच्चा तुम बताओ, or you say, तुम्हारा भविष्य क्या, तुम क्या बनना what is चाहते your हो? future? बोलते, सर मैं Sir, डॉक्टर बनना I चाहता want to be a doctor. हूं। वेरी गुड। Very good. दूसरे से पूछा, अच्छा Others, बच्चा तुम other बताओ तुम child क्या said, बनना चाहते हो? what do you सर want to मैं become? सिविल इंजीनियर, I want to become a civil engineer. मैं मैकेनिकल I want इंजीनियर, to become a mechanical मैं engineer, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, electronic मैं engineer, कंप्यूटर इंजीनियर, computer engineer. इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। उसमें सबके बड़ी बड़ी भावनाएं, All had big तुम dreams. क्या बनना चाहते हो? What do सर you मैं want to चार्टर्ड become? अकाउंटेंट, Chartered accountant, मैं कंपनी सेक्रेटरी, company secretary, मैं मास्टर डिग्री, master मैं degree, पीएचडी, PhD. सब अपना अपना। पीछे एक बच्चा चुपचाप ऐसे बैठा, One child was sitting ध्यान से behind, सुन रहा था। backbencher. He was listening मैनेजमेंट के carefully. लोगों ने पूछा, अच्छा तुम बताओ So somebody asked him, you say, तुम क्या बनना what चाहते do you want to become? हो? उसने बोला, सर And he said, sir, मैं सुखी बनना चाहता I want to be happy. I want to become happy. हूँ। कहते, क्या? दोबारा What? बोलो। Say again. बोलते, सर मैं सुखी Sir, बनना I want to चाहता become happy. I want to become a हूँ। happy उसकी person. एक ये बात This सुनकर one statement of him, सब लोग हैरानी से everybody was ध्यान से उसको astonished. देखने लगे।
And they started looking at him कितनी बड़ी carefully. बात कही, Such a big thing, he और said. सबने मुड़कर देखा इसको, And everybody turned back and listened to him. बोले हाँ, Yes, इसके एक वचन से this one इसने सबका मुंह बंद कर statement, his one statement closed the सबकी mouth बात of को all other people छोटा कर around him. The big words of others क्यों? became small. Why? जो बड़ा डॉक्टर बन जाएगा गारंटी है वो सुखी बनेगा, If you become a doctor, is there जो any बड़ा guarantee इंजीनियर you will बन become जाएगा happy as well? गारंटी है वो सुखी Is सुख there any प्राप्त होगा, guarantee if you become a civil engineer, you'll also become a पीएचडी very कर happy लेगा, person? If you become सीए a बनेगा, PhD holder, computer तो ये engineer, गारंटी है उसको is सुख there any प्राप्त होगा। guarantee मेरे बहुत सारे मित्र सीए you're gonna? बेचारे रोते रहते हैं I रोज, have so many friends who are CA. They always cry. इसकी गारंटी है Is there any guarantee of हाँ, happiness? No. उसने ये जो कहा कि सर मैं सुखी बनना चाहता हूँ, इन सब करियर में सुख नहीं है, There's no happiness in all these professions. Maybe little. समाज में नाम इत्यादि जरूर You can होगा, get name and fame in your society, लेकिन एक बार भगवान का जो but भक्त बन once जाए, you become a devotee of the Lord, जिसकी भक्ति करेगा भगवान, you do bhakti of Bhagwan, सारा विश्व उसको the entire world कंधे पे बिठाता है, will keep on you on their सब उसकी shoulder. पूजा करते हैं, Everybody would worship you. सब Everyone उसको would मान worship देते you, हैं, क्योंकि respect you, उसने because जो अपना करियर चुना you वो left कौन your सा career सुखी बनने का, to become और जो happy. सुख And the भगवान happiness की सेवा और भक्ति में है, is there in in serving the इससे Lord. बढ़कर और कोई करियर There's ही नहीं। no career profession than ये बात more कोई bigger than that. मानेगा? आज यूनिवर्सिटी में जाकर ये बात बोलूं तो, If you say this in the university, will people agree? अगर ये बात कहूं तो स्टूडेंट्स If को I say this to कि students तुम लोग that ये भक्ति करो, you सुखी do सुख bhakti प्राप्त करोगे, and attain तो ये happiness, क्या बेकार की बात they will है। say, what nonsense. अंदर से रो रहे हैं लोग, वो People are स्टूडेंट्स, crying from inside. Students are crying जीवन from inside. खराब हो चुका Their है, life is भोग कर करके हर finished चीज भोग करके देख doing लिया, sense एंजॉय gratification. Their कर life is over. सुख प्राप्त नहीं। They don't have happiness. इसलिए कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, So someone कोई is तन से dukhi दुखी है, by कोई मन से mind, दुखी someone है, is dukhi कोई by किस प्रकार body. से दुखी है, लेकिन सबसे बड़ा सुखी कौन So, है? but who is happy? हाँ, जो Then भगवान की भक्ति the करता one है, who is doing bhakti of वो सबसे Bhagwan. बड़ा सुखी। He is topmost happy person. इसलिए So सची माता कह रही Sachi है, Mata हे is saying, Hey निमाई, Nimai, हे बाछेर, hey हे Bacher, बाछेर निमाई, हे मेरे बच्चे निमाई, hey, oh my son तुम अपने बड़े Nimai, भाई you विश्वरूप की तरह निष्ठुर like मत your बन जाना। elder brother उसने तो Vishwarup, सन्यासी होकर don't become फिर कभी Nishthur, दर्शन नहीं stone दिया, hearted. He तो never कभी मेरे came पास back to नहीं me आया, and showed me his ऐसा face निष्ठुर तुम after मत हो taking जाना। sannyas. यदि You तुम don't भी become वैसा like him. करोगे तो मैं तो If अपने you do निष्ठुर like रूप him, से then ऐसे ही तो मर गया, I will मैं just जिंदा die. नहीं रहूंगा, I won't be able to मैं live. जीवित नहीं रहूंगा, Won't be able to मैं live. मर गया। I will die. I will die. क्योंकि सच्ची माता के पास अब और कोई Because है नहीं। Sachimata has no other child with her. पति Husband, जगन्नाथ मिश्र Jagannath जी Mishra, परलोक गमन हो गया, he went to Parlogaman. I बड़े mean, पुत्र विश्वरूप ने सन्यास ले लिया, निमाई Golokdham. तूने भी सन्यास ले लिया, Elder brother, son अब took दुनिया में चला sannyas. जाएगा, Nimai, पुनः if दर्शन you नहीं देगा, also आएगा नहीं, तो मैं तो don't come अवश्य back, मर जाऊंगा। means you also took sannyas. And if you never show me your face काव्य again, बोले ना प्रभु, then how will I शोभ survive? मोर आई, तुम्हारा शरीर ei, मोर कछु नहीं। अब तो महाप्रभु जी का क्या? महाप्रभु जी भी रोते हुए कहने लगे, Mahaprabhu is महाप्रभु भी रो crying. रहे हैं, He's also crying. Both of them are crying. महाप्रभु जी निष्ठुर थोड़े ना है। आज जब उन्होंने सन्यास लिया, जिस घाट से उन्होंने गंगा जी हृदय घाट So the Nirday Ghat, नवदीप में there जाओ, is a place at Navdeep. It's अलग called, अलग घाट के अलग अलग there are नाम है, different गंगा जी ghat. में जो घाट होते हैं, Ghat means the जिस स्थान beach. से निमाई महाप्रभु जी ने But the गंगा जी में beach स्नान where जब Mahaprabhu छलांग लगाई, jumped in सन्यास लेने के Ganga लिए छलांग to लगाई, take उस sannyas, घाट का नाम ही बन गया that क्या? ghat, निर्दयी घाट, ghat became निर्दय घाट, Nirday Ghat. मतलब निर्दयी। महाप्रभु Nirday, जी निष्ठुर होकर Nirday खड़े, means Nishthur, hard, तो stone महाप्रभु जी hearted. निष्ठुर नहीं है, उनके हृदय में भी बहुत भावना है। He is not actually stone महाप्रभु hearted, रोते he हुए has कह रहे हैं, emotions. मेरी Mahaprabhu. प्यारी माता, Mahaprabhu is saying, oh my सुनो, dear mother, ये listen, शरीर तुम्हारा ही है, this body is मेरा yours. कुछ भी नहीं, Nothing is mine, nothing belongs to आपसे ही me. मेरा जन्म हुआ है। You gave me birth. तो कैसे महाप्रभु जी बोले? See how Mahaprabhu is saying. कांदिया बोले ना प्रभु सुनो मोर आई, बंगाल में माँ को कहा जाता है आई, In Bengal, mother is called as I. तुम्हार She is शरीर referred ei, as I. मोर किछु नहीं, It's your body, ये it's मेरी not खाई, mine. ये मेरी It's माता। not my property.
मेरा अपना तो कुछ भी नहीं है, Nothing is mine. This, even is this body is yours because you gave me this body. You brought me up. You gave me birth. You brought me up. In many different births, I can't pay you back. I have come from you. You took care of my body. In millions of births, I can't repay you for what you have done for me. Millions, trillions of birth, I can't repay that. I can't repay for what you have done for me, the service. यदि करिलो संन्यास तथापि तुम्हार कबू नहीं पे उदास. Mahaprabhu is saying here that जानकर intentionally or unintentionally, जानकर या फिर नहीं जानकर, knowingly or यदि भी unknowingly, मैंने संन्यास ग्रहण किया है, I have taken sannyas. मैं कभी Still, भी आपके I will प्रति never, उदासीन नहीं हूँगा. I will never महाप्रभु go जी away from माता you. के सामने कहें, आपके प्रति कभी उदासीन नहीं होगा. तुम्ही जहाँ कहीं अमी तहाँ रही हो. Wherever, तुम्ही जे आज्ञा करो, whatever instructions you give me, I'll follow. कह रहे महाप्रभु जी, आप मुझे जहाँ कहोगी मैं वहीं रहूंगा. Wherever you want आप me मुझे to जो stay, आज्ञा I would देंगी stay. मैं वैसा ही Whatever करूंगा. instructions you give me, महाप्रभु I'll जी follow. विनम्र भाव से Mahaprabhu is very, सची like, माता को humble. रोते रोते कह रहे हैं ये He's शरीर crying. तुम्हारा है, ये He's being मेरा नहीं है. humble. और मैं करोड़ जन्मों से He's जन्मों में saying, भी आपके इस ऋण को नहीं this is चुका your पाऊंगा body. अपने I can't शरीर को repay you छोड़ के. back in many इसलिए मैंने millions of संन्यास तो birth. ले लिया, I've taken sannyas, but मैं उदासीन नहीं होगा. इसलिए हे माता, आप जहाँ कहोगी मैं वहीं पर ही रहूंगा. but dear mother, wherever you say आप मुझे आज्ञा me to दीजिए, stay, I'll stay जैसा only कहोगे there. वैसे ही करूंगा. You just give me your मेरा निष्ठुर instructions. नहीं है. I'll just do as you say. This is Mahaprabhu. ये तो बोली पुनः पुनः करे नमस्कार, तुष्ट हैया आई खोले करे बार बार. And further, ये कहकर Mahaprabhu बार बार माता को प्रणाम करने saying this प्रणाम करने. simultaneously, सच में, Mahaprabhu ये is नहीं कि महाप्रभु जी doing नाटक कर रहे pranam हैं. to Mahaprabhu again and again, again and again. And this is not some हृदय से drama. He's not just doing some नाटक वाली बात. play. He और ये means भी it. नहीं कि मैं अब सन्यासी हो गया, आप मेरी माता हो तो And क्या he's हो not गया. like, I am a sannyasi, you're just my mother. You are so tiny, I'm so big. It's not like that. प्रणाम कर रहे हैं और He's सच्ची giving माता so भी much संतुष्ट respect to his होकर mother, so उनको much, बार-बार गोद being a में लेने sannyasi, लगे. बार-बार उनको गले लगा रहे. hugging her. कैसा वहां पर एक It's a beautiful scene. कैसा ये दृश्य होगा, This, विचार करके. just और think इसको on it, यदि just हम meditate on it. एक नाटिका के रूप में एक इसको दर्शन करें तो सच में ये रुलाने वाला And है. we, if we, show हमारे this like a गुरुदेव play, then this is very जब ऐसे दृश्य देखते थे emotion, बड़े full of भावुक हो emotions. जाते थे, When Gurudev रोने would लग जाते थे. see this kind of play, he would become very emotional and he would get tears in तबे his आई eyes. गैया He would get emotional. आचार्य गेला अभ्यंतरे भक्तगण मिले थे प्रभु भाईला सत्वरे. तब श्री अद्वैताचार्य So सची Advaitacharya माता को घर के then भीतर ले गए. took Sachimata inside the house. अद्वैताचार्य प्रभु जी आए. Advaitacharya अरे Prabhu अरे सची came माता आई. and he said, oh, चलो Sachimata चलो has घर के come. भीतर चलो. Let's go inside the house. महाप्रभु तब सभी भक्तों Mahaprabhu से मिलने लगे. then met एक एक all the करके disciples महाप्रभु जी one by one, सारे one भक्तों by से one. मिलने All his disciples he met. एक एक करके महाप्रभु सभी भक्तों He's से giving मिले time to all his और सभी disciples के मुख को देखकर and he's looking at वे their उन्हें गाढ़ faces आलिंगन करने लगे. and he's hugging them. एक एक के मिले या प्रभु सब भक्त गणे सबार मुख देखी करे दृढ़ आलिंगने. सबार मुख देखी करे दृढ़ आलिंगने. एक एक भक्त को महाप्रभु जी आलिंगन. He's meeting each and everybody, not missing a single disciple, and अभी यहाँ पर ये कौन से भक्त hugging हैं? them. And who are these disciples? नवदीप के भक्त हैं. Navdeep disciples, inhabitants of Navdeep. इनके साथ महाप्रभु जी 24 वर्ष तक रहे हैं. Mahaprabhu lived with them for महाप्रभु जी 24 का इनके years. प्रति So और इनका Mahaprabhu महाप्रभु के प्रति have कितना सुंदर Mahaprabhu भावना. has beautiful relationship with them, and they also have. तुम्ही जहाँ कहे So they all came to meet Mahaprabhu. हो गया. And the next verse is that केश न देखिया भक्त यद्यपि पाए सौंदर्य देखते तबो पाए महासु. सभी भक्त अब महाप्रभु सबको गले लगा रहे हैं. so Mahaprabhu is hugging everybody. महाप्रभु जी जिस जिससे मिल रहे हैं ना
So everybody is seeing Mahaprabhu has no hair on his head. First, first their sight goes to Mahaprabhu's head. So people are feeling sad because Mahaprabhu has taken sannyas. But still, seeing the beauty of Mahaprabhu, they were satisfied. He has no beautiful hair anymore, but still his beauty is so like undescribable. You can't describe it. Like it's more than the shine of millions of moons, sun. Ujjalavardha Gaurav. विलासिता निरवधि भाव विदेह त्रिभुवन पावन कृपाय देशम तम नमामि च श्री सच्चिदानंद। बड़ा सुंदर भजन। This is a beautiful bhajan. तो उस भजन में जब पूरा जब सुनेंगे तो अंतिम में वे क्या आता है? If you hear this bhajan, मुंडम, then in the last it says मुंडम, mundam. पंक्ति है, अभी स्मरण नहीं है। There's one statement, one line. तो उसमें महाप्रभु के अब मुंडन कर लिया, केश नहीं है, ये देखकर भक्तों को दुख हुआ। Devotees are not happy to see Mahaprabhu without hair, but still his beauty is so like astonishing that seeing that beauty इनका नाम सुनने से is भक्ति also मिल जाती है। satisfying disciples of इनके नाम ही Mahaprabhu. सुनो, शिवास रमाई, So who all came? विद्यानिधि Let's hear कलाधर, their name. गंगादास वक्रेश्वर, Gangadas Vakreshwar, मुरारी Murari शुक्लांबर, Shuklambar, बुद्धिमंत खान, Buddhi Mantra Khan, नंदन श्रीधर विजय, Nandan Sridhar Vijay, वासुदेव दामोदर, Vasudev Damodar, मुकुंद संजय, Mukund Sanjay. कत नाम लई हो जत नवदीप वासी, सबारे मिलिला प्रभु कृपा दृष्टि हास। They all came to कौन से भक्त बताए? all these devotees. शिवास, Shivas, श्रीनिमाई, Srinimai, श्री विद्यानिधि, Shri Vidyanidhi, श्री Shri गदाधर, Gadadhar, श्री गंगादास, Shri Gangadas, श्री वक्रेश्वर, Shri Vakreshwar, श्री मुरारी, Shri Murari, श्री Shri शुक्लांबर, Shuklambar, श्री बुद्धिमंत Shri खान, Buddhimant Khan, श्री नंदन, Shri Nandan, श्रीधर, Shri श्री Vijay, विजय, Vasudev, Damodar, श्री Mukund, संजय, Shri Sanjay, आदि जितने Adi, नवद्वीपवासी भक्त etc. वहाँ आए थे, All came. कह रहे हैं कहाँ तक उन्हें सबके नामों का उल्लेख करो। कविराज गोस्वामी, Kaviraj Goswami is कृष्णदास saying, कविराज गोस्वामी जी कह रहे हैं, Krishnadas Kaviraj कितना Goswami is नाम saying, का उच्चारण how, करूं, how many सभी तो names आए। can I describe? All came. Everyone came. महाप्रभु मंद मंद मुस्कान के Mahaprabhu is साथ smiling कृपा दृष्टि वर्षण करते हुए and giving सबसे mercy, and he met महाप्रभु मंद मंद हंस everyone. रहे हैं। He's, महाप्रभु की हंसी भी he's smiling softly. कैसी हंसी, एकदम मंद मंद, थोड़े से होंठ ऐसे हो जाएं जैसे कृष्ण, वो भी ऐसे ही हंसते Like हैं। Krishna would also smile महाप्रभु भी like ऐसे this. हंसते हैं, Mahaprabhu is एकदम also मंद smiling मंद like this. मुस्कान, Mand मेरा Mand हास्य Muskan. मधुर मधुर, Soft smile. मंद मुस्कुराहट। आनंदे नाचे सबे बोले हरि हरि, So आचार्य मंदिरे in हरि बोल, happiness, शिवे everybody is smiling, laughing, and saying सभी Hari आनंद Hari. पूर्वक नाचते हुए हरि बोल Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. सब नाच रहे They're हैं और dancing हरि बोल and पंक्ति saying से Hari गा रहे Bol, Hari Bol. हैं। आज ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो जैसे अद्वैताचार्य प्रभु का घर It वैकुंठ की looks तरह like हो as गया if है। Advaitacharya's house has become a हो Vaikunt. क्या गया, अद्वैताचार्य प्रभु का घर ही वैकुंठ है, His house is Vaikunt. क्योंकि कहाँ पर है ये घर? Because where is this शांतिपुर। house? Shantipur. और शांतिपुर को क्या कहा गया? What is Shantipur? वैकुंठ, Vaikunt. क्योंकि परम शांति कहाँ है? Where is Param Shanti? Eternal happiness? इस भौतिक संसार में शांति है? Is there any happiness in परम this शांति world? कहाँ है? वैकुंठ No. में। The eternal इसलिए वो peace is शांतिपुर at Vaikunt. श्री अद्वैताचार्य जी The का, और उसमें भी Shantipur उनकी घर at his साक्षात house वैकुंठ की तरह हो। is just like Vaikunt. Not that his house has become Vaikunt, but his house is Vaikunt. नाना ग्राम हईते, हार नवदीप हईते, सबाकार वासा दिला, भक्ष्य अन्न पान, And बहुज Maharaj is saying आचार्य the next गोसाई verse करने now. समाधान। महाप्रभु को मिलने के लिए जितने भी भक्त नवदीप से आए, So all those people और who उनके came गांव from से आए Navdeep to थे, meet Mahaprabhu from his बहुत दिनों village, तक they श्री अद्वैताचार्य ने उन सब के लिए Advaitacharya रहने का arranged स्थान their तथा भोजन accommodation, आदि की सारी व्यवस्था prasadam की। for all of them. For all those भक्तों को people who अपने came घर from में रखना Navdeep, और who came from उनको Navdeep to प्रसाद Mahaprabhu. इत्यादि So सेवा keeping कराना, devotees in your house, arranging for ये their अपने आप में accommodation, arranging for their बहुत बड़ी prasadam, एक वैष्णव सेवा it's a है। big Vaishnav seva.
श्री अद्वैताचार्य जी गृहस्थ आश्रम में हैं, Advaitacharya संन्यास आश्रम ji में नहीं is है। not a sannyasi, he is a अपनी grihast पत्नी ashram. सीता ठकुरानी के So साथ रह रहे with हैं his और wife, क्या he's living आदर्श with his दिखा रहे हैं wife Sita कि Thakurani, महाप्रभु and भी यदि he's मेरे giving घर us में an हैं, बड़े example सारे भक्त मुझसे मिलने आए हैं, तो how to मेरा serve कर्तव्य Vaishnavas. It's है my duty सबके to रहने की serve व्यवस्था Vaishnavas who have come और इन to सबके see Mahaprabhu, प्रसाद की व्यवस्था ही हम and it's my करें। duty to arrange for their food, prasad. ऐसे ही भारत में फरीदाबाद में So in मैं इनके Faridabad, घर में India, रहता I used to सुनीता stay माता जी के at घर the house of सुदेवी Sunita दासी। Mataji, Sudevi Dasi. जब मैं उनके घर में रहता So when I used to stay at सारे their भक्त house, all devotees कोई किसी देश विदेश से सब जगह from से जहाँ पर any भी part आए of the world, they would come. ये अपना सारे कमरे सब द्वार They सब would खोल give देते all कोई their कहाँ सो रहा है rooms कोई कहाँ सो रहा है फिर to उनके लिए रसोई devotees, उनके लिए and प्रसाद she would cook for them, और ऐसे नहीं मुंह ऐसे करके वो खिलाना ही and पड़ेगा not बिल्कुल भी ऐसा with नहीं stress but with happiness. बड़ी प्रसन्नता से पूरे घर वाले पति पत्नी बच्चे Everybody, सब the मिलकर husband, the wife, the बड़ी children, हर्ष होकर वो with सच joy. में हमारे घर में भक्त आए Oh wow, devotees have और come to our कभी मैं house. बोलता भी हूँ नहीं आपके लिए बहुत ज्यादा And हो जाएगा sometimes नहीं I नहीं would say, नहीं you will रखना get stressed. They आएंगे would say, रहेंगे no, no, no. Where would they go and हाँ stay? They would इतना stay with प्रेम our house, in our house. इसको कहा जाता है भक्त This सेवा is called Bhakta Seva, Vaishnav Seva. तो अद्वैताचार्य प्रभु इस So प्रकार से ही आदर्श Advaitacharya दिखा Prabhu is showing us an आचार्य गोसाई भंडार अक्षय example अव्यय how to serve Vaishnavas. जत द्रव्य व्यय करे तत द्रव्य है और एक बड़ी सुंदर बात है This is a beautiful line. श्री अद्वैताचार्य Shri जी Advaitacharya का ji, भंडार his bhandar, अक्षय तथा अव्यय था जितने द्रव्य व्यय करते उतने ही द्रव्य फिर आ जाते so it means that उनका भंडार कैसा हो गया अक्षय bhandar कभी जिसका means क्षय नहीं होता समाप्त नहीं होता the place where they give grains in the house. कभी उनका It would never भंडार empty. समाप्त नहीं It would never होता end. जितने भक्त आ जाएं जितने भी खाने No matter how many भंडार बढ़ते devotees चला come जाता है जितने द्रव्य and हैं eat in सब his बढ़ता house, जाता है बढ़ता जाता that bhandar would just keep on है increasing, सही दिन increasing, and आईते शुचि increasing. करे न रंधन Bhandar means a भक्त कलु place where, लैया where प्रभु you करे store न the भोजन grains, the rice and the wheat उस and दिन से सची gehu, माता स्वयं other भोजन बनाने grains in the लगी house, in the kitchen, in the storeroom. और सभी It भक्तों would को never साथ लेकर go महाप्रभु empty. It would always भोजन keep करने on लगे increasing automatically, no matter how many people come and eat. समझ रहे हैं दृश्य अद्वैताचार्य जी के घर में भक्त लोग आ रहे हैं So at the Acharya's अब सची माता house, devotees are coming, ये रसोई कर रही है and Sachimata is सब भक्त cooking लोग now for महाप्रभु सहित महाप्रभु भी और सारे भक्त Mahaprabhu. सची माता के द्वारा बनाए हुए जो वो व्यंजन है Sachimata is भोजन है cooking Vyanjan बड़े food, प्रीति पूर्वक उसको and वो ग्रहण कर Mahaprabhu रहे and other devotees are eating हैं the ऐसे prasad cooked by Sachimata. सिर्फ एक दो नहीं ऐसी कितनी माताएं हैं जो पूरे जगत में पूरे वर्ल्ड में फेमस है हम लोग हॉलैंड में जाते हैं वहां पर मैया When we go to Holland, मानंग मंजरी माता there is Anang Manjri Mataji. इनके घर में भी जब जाते हैं When I go to जितने their भी भक्त आ house, जाए no matter how many devotees come कितने there, भी प्रचारक आ जाए how many पूरा preachers come घर there, खुला है the entire house is full, gets full. पूरा घर The entire कितने house. भी भक्त आ जाए No matter how many people come in the day, in the night, in the evening, because where sannyasis live, stay, people come to meet them. And if devotees are coming, you can't send them empty. You can't just send them back without serving any prasad to them. बात कहते कहते तो सच में हृदय पिघल जाता है क्योंकि मेरा इसलिए हृदय पिघलता है क्योंकि So मैं I ऐसा feel नहीं कर सकता emotional. Maharaj is saying this, seeing तो हम these. भी दुखी हो जाते हैं अरे फिर कोई आ गया फिर कोई आ गया Okay, अरे बार बार लोग आ every रहे हैं moment people अच्छा सामान खत्म come हो in the जाएगा house. इतना खर्चा हो जाएगा कभी ऐसा Okay, विचार आता है they have to spend so कि much बड़ा money on हर्ष और food, on buying उल्लास का विषय food, है or their bills are हमारे घर increasing, में but they don't feel sad. The साधु devotees, आ रहे हैं like हमारे घर Anang में Manjri वैष्णव आ रहे हैं Mataji, they feel happy that Vaishnavas are है coming to our एक house. सौंदर्य है This is their यही beauty. घर का तात्पर्य है This is the meaning of having a house. ऐसे बहुत सी माताओं के घर में हम लोग जाते So हैं as like her, फरीदाबाद में I go to मंगला so माता many जी other सुनील माता जी Matajis हॉलैंड में भैया at इनके घर Faridabad, में और ऐसे बहुत सारे हैं Holland, England. किस किस का नाम है I mean, there's so many. I don't know माता जी इनके how घर में भी जाओ तो how many names I कितने can भक्त आ take. जाते हैं कभी So कभी many तो मैं भी devotees बोलता हूँ come. Sometimes even I अरे say, उनको ऐसे हाथ में केला दे दो सेब दे or दो just give them some fruit, some bananas, and तो let them भैया go. But then they वो say, बिगड़ जाती है बोलते नहीं no, सब काम से आए हैं they have भूखे हैं they are hungry. They have come अपने to तो meet बच्चे you. हैं They are our ये children. अपने आप ही एक मातृ वाला So भाव there's vatsalya love in ये the मातृ hearts of भाव these जो होता है वो mothers. सबके
भाग्य में नहीं प्राप्त They don't have, everybody can't get it. सबके भाग्य It's में not easy for everyone to have it, this feeling सबको अपने बच्चों जैसा देखती to है take everybody as their अच्छा child. जिसको जो पसंद है उसके लिए वही बनाएगी Whatever they like, I'll cook किसी को that. एलर्जी है कोई Somebody's allergic, बादाम नहीं खा somebody सकता can't कोई ये eat नहीं खा almonds, सकता उसके somebody लिए can't अलग eat बनाएगी nuts. They make separately for them. इतना वात्सल्य है So much love in the heart of ऐसे these उन mothers. वात्सल्य माताओं को So हमारा I प्रणाम offer pranam to और all इस these वात्सल्य mothers माताओं में who भी have such सबसे श्रेष्ठ vatsalya जिसका love. वात्सल्य है So who is the वो सची topmost माता mother? Sachi उनके Mata. चरणों में तो At her अनंत lotus कोटि feet, प्रणाम we वो offer जगत माता unlimited वो obeisances. साक्षात She is महाप्रभु Jagat की माता Mata, the mother of Mahaprabhu. कितना वात्सल्य उन So माता much का vatsalya love she आज has. वो Today, वात्सल्य स्नेहमयी with सच्ची love in माता her heart, she is cooking. अपने महाप्रभु के लिए नहीं Not for समस्त just भक्तों के लिए her child रसोई Mahaprabhu, कार्य but आरंभ for कर all devotees, all disciples. रसोई कार्य Cooking, she's रंधन cooking मतलब रसोई herself. बनाना भोजन बनाना ये मैंने किया है ठीक है आज यहीं पर रखेंगे So let's end it today आगे here. कथा कल सुनेंगे Next katha we'll hear tomorrow. हृदय को छूने वाला The heart touching pastimes of Mahaprabhu. हरि नाम करते समय इसका चिंतन करो When we chant Harinam, we should think of कैसे all these महाप्रभु pastimes. संन्यास लेकर How Mahaprabhu took sannyas वृंदावन जा रहे and थे he नित्यानंद wanted to प्रभु go to Vrindavan, but Nitan Prabhu tricked him शांतिपुर to में ले आए Shantipur. He brought him to इसलिए ले Shantipur. आए Why? नवदीप वाले सब For एक बार मिल Navdeep तो ले people, so that they could see सच्ची him. माता एक बार मिल तो ले Sachi Mata could फिर पता see नहीं Mahaprabhu. महाप्रभु जी Then कौन सी दिशा you में don't know चले where किसी Mahaprabhu का would भरोसा go नहीं after taking sannyas. उनका कोई भरोसा नहीं कौन This से दिन और कौन सी दिशा we में वो don't चले know on which day where he will go. प्रभु चाहते थे एक बार Nitya सब Prabhu मिल जाए wanted that everyone should meet Mahaprabhu once. इसलिए सच्ची माता So कैसे Sachi Mata, महाप्रभु के साथ मिलन कर रही है she is रो रही है crying in front of और महाप्रभु Mahaprabhu, जी कैसे सच्ची माता को आश्वासन and दे रहे हैं Mahaprabhu मैं is तेरे consoling को Sachi Mata. सब कथा को सुना बाकी कथा को हम लोग अब कल श्रवण करेंगे आज एक गौर प्रेमानंदे Hari Hari Bol, Gaur Premanande, बोलो Hari Hari सच्ची Bol. माता की Sachi Mata ki jai. सच्चिनंदन गौर हरि Sachinandan Gaur Hari ki jai. श्री चैतन्य चेतामित की Sri जय Chaitanya Charitamrita श्री ki jai. कृष्णदास कविराज Shri गोस्वामी Krishnadas जी की Kaviraj जय Goswami ki jai. श्रील गुरुदेव की Srila जय Gurudev ki jai. Hare Krishna.